Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 66 for that topic sexual reproduction in flowering plants. Now we have studied about the pollen grains, their nature and all. Here in this article I will give some more information regarding the pollen grain, regarding the viability of pollen grains. We have seen that whenever the anther gets matured, then the rupture of this anther takes place. Is the anther suppose? Okay. And by rupture of the anthers, that all pollen grains will be released out in the form of pollen dust particles. So these are the pollen grains which are release free. अब यहां से उनका भवितव्य क्या है? That God knows. यानी ईश्वरी इच्छा. These pollen grains which are release free by dehiscence of anther may get carried by different agents. So we have to learn in detail that process called as the pollination and pollinating agents also. क्योंकि ये खुद तो नहीं जा सकते. So they will be either carried by air or wind. Wind current से कई बार जाते हैं. Okay. Or they will be carried by some animals. Knowingly, unknowingly. Okay. And that animals are including large number of the insects there. Insects of all kinds can show this pollination. Okay. Also even some birds. Also some snails. We are going to learn that. Bat also. So they agents may carry these pollen grains there. अगर वो फ्लावर से जब निकले हैं उसी वक्त अगर वो एजेंट के पास जाते, एजेंट वहाँ फ्लावर के पास जाता है, that may be the insect or bird or that bat etc. I told, तो उसके शरीर को जो वो pollen grains लगते हैं, and if that particular insect will go on another flower of the same kind, then that transfer takes place. तो ये आपने बचपन में सुना है, इसे कहते हैं pollination process. What is that? So they are carried for what process? They are carried for pollination, which is very important life event in the flowering plant. उसे marriage of the flower भी कहते हैं. अब pollination के बाद कुछ थोड़े ही pollen grains जो है उनका भाग्य खुलता है, and then they may fall on the stigma. ये जो फ्लावर्स में हमने बताया था आपको, ओवरी स्टाइल एंड दैट सपोज स्टिग्मा इज देयर. दिस इज स्टिग्मा, दैट मे बी द स्टिग्मा. ओके. ये जो स्टिग्मा हम बता रहे हैं यहाँ पे चाइना रोज में 5 होते हैं. सो दिस स्टिग्मा में कैरी दैट. इस स्टिग्मा पे वो पोलन ग्रेन का डिपोजिशन अगर हो गया, देन ओनली द पॉलिनेशन इज सक्सेसफुल, अदरवाइज नॉट. और वो भी सेम काइंड पे, यानी अगर ये चाइना रोज के पोलन ग्रेन है तो चाइना रोज के ही स्टिग्मा पे जाना चाहिए. इफ दे आर द पोलन ग्रेन ऑफ पी प्लांट, दे शुड गो ऑन द पी प्लांट. तो वो सक्सेसफुल पोलिनेशन. एंड देन आफ्टर द पोलन ग्रेन्स विल प्रोड्यूस द मेल गैमेटोफाइट दैट वी शैल लर्न एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं. वन ऑफ दैट सेल इज है, उसका आउटर लेयर है वो एक्साइन है. ओके. उसको कुछ ऐसे जर्म पोर्स भी है. एक्साइन इज नॉट देयर, हमने लर्न किया है. देन दिस इज इंटाइन. नाउ वन ऑफ द सेल इज देयर नोन एज दैट जनरेटिव सेल, स्मॉलर, एंड द लार्जर इज नोन एज व्हाट? ट्यूब सेल. दिस इज ट्यूब सेल and this is generative cell. Okay, so we are going to learn later on when this will be falling on that stigma of proper kind, then only it can undergo germination, otherwise not. तो वहां पे फिर उसका जर्मिनेशन हो जाता है. ये ट्यूब सेल से एक पोलन ट्यूब बनती है जो स्टिग्मा से अंदर तक जाती है. And this generative cell will be producing 2 male gametes which are non-motile. Okay, ये एक्साइन वाला पार्ट है particularly.
and this is in diagrammatic way I am showing. These are two male gametes. They will be produced. This structure is called the male gametophyte. And now these male gametes, अब ये यहाँ से जो निकलेगा pollen tube वो जाएगा अंदर ovary में, and inside the ovary that will fuse with the female gamete present in the ovule. So वो total process हमें learn करनी है. We have to learn the event of pollination. We have to learn that types of pollination. We have to learn the agents of pollination, special characters shown by that particular pollinating plants, and then after the fertilization. So before fertilization, how this happens, that we shall learn in detail. पर यहाँ पर जो मुझे पॉइंट डिस्कस करना है वो है viability of pollen grain. That means once the pollen grains are shed, they are given outside. What will happen with them in future? That ईश्वरी इच्छा मैंने बताया. Isn't it? They may get pollinated successfully. They may not get pollinated successfully. अगर pollinate नहीं हुए तो वो खत्म हुए, मर जाएंगे. तो कितने पीरियड तक वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं, सर्वाइव होते हैं, उसे कहते हैं vitality. Okay, regarding the vitality of pollen grains, or that is called the viability. उनकी सक्षमता कितने देर तक है और कितने देर तक वो they can work successfully. That is vitality and viability. So viable, for how long period they may be viable, that is variable. यानी कहाँ तक viability चाहिए? Pollen grains should get deposited on the stigma, और स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाएंगे and then producing two male gametes along with the pollen tube. तो ये होने के लिए कितने देर तक वो सर्वाइव होते हैं उसे कहते हैं viability, and that is variable. This vitality can be maintained for a variable period there by variable plants, flowering plants. जैसे कि wheat और rice जैसे plant है. In them the viability will be there for only and only 30 minutes. 30 मिनट के लिए viability है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं है. ओके, उसके बाद में वो अगर 30 मिनट में ये हो गया pollination, then only they will germinate, then only they will produce the pollen tube and two male gametes. If they are not going to germinate within 30 minutes, then that pollen grains will become dead. Okay, तो ये pollen tube और male gamete तैयार करने के लिए उनको खाली 30 मिनट का ही समय है, वहां तक ही उनका pollination हो जाना चाहिए. कौन से प्लांट में? In wheat and that particular rice. Okay, but there are some plants of the families like Rosaceae, Leguminosae, Solanaceae. ये नाम के ऊपर आपको समझेगा. रोजेसी में रोज जैसे प्लांट आते हैं. देन लेग्यूमिनोसी, a big family, all pulses, pea, groundnut, etc. all they will be there in the leguminosae. Solanaceae में हमारा पोटैटो जैसा प्लांट आता है, टोमेटो, पोटैटो, चिलीज, they will be there in the Solanaceae. So in all these plants of these families, the pollen grains viability may be there for months. कई महीनों तक वो पोलन ग्रेन्स खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं फॉर पॉलिनेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन. सो दैट इज अ ग्रेट कैपेसिटी. यानी आज समझो पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया है, देन दे मे सर्वाइव फॉर मंथ्स टुगेदर. इवन आफ्टर 1 month, 2 months, they will reach there on the stigma. Still the germination will be there. Still that pollen tube and the male gametes will be produced and fertilization will be there. That is called viability. खुद को मेंटेन करके रख सकते हैं. ग्रेट कैपेसिटी. तो इसमें और एक पॉइंट हमें लर्न करना है, पोलन बैंक्स नाम का. So nowadays the botanists, they have tried to preserve the pollen grains with their viability for years together, keeping them at the low temperature, as low as the temperature of liquid nitrogen, almost liquid air,
that is minus 196 डिग्री सेल्सियस. लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो माइनस 196, तब तक वो नाइट्रोजन गैस ही रहता है. ये टेम्परेचर को वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है माइनस 196, जीरो के नीचे. Isn't it? So till then that temperature to be reduced, the nitrogen will become in liquid state. तो ऐसे कंडीशन में इस टेम्परेचर को pollen grains can be stored very safely and whenever required they can be taken out. and जैसे हम फ्रीज में रख देते हैं हमारे कुछ फूड कंपोनेंट्स है जैसे, and then they can be used whenever they are required for pollination. That is called as pollen bank. ऐसे ही एनिमल्स में सीमेन बैंक भी की जाती है, and later on that semen can be used for artificial what is that insemination process. वैसा ही है for artificial pollination there they can be used there later on. So crop breeding experiments जो चलते हैं आजकल उसके लिए ये काम आ जाता है. So pollen bank क्या एक्टिविटी है, वहाँ पे कौन सा टेम्परेचर रहता है, all that you should know very properly. So all these informations I am confident you must have understood. They are very important. Don't ignore that part and prepare that very nicely. And do like and share my video to the friend circle, and do subscribe to my XIIth Biology and XIIth Biology Shorts channel. Thanks a lot.